Dear students, after discussing subject and different forms of object, now we will discuss how a subject uses different verbs on the same object. Pay attention. मैं तुम्हें ग्रामर पढ़ाना पसंद करता हूँ. अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तुम्हें और ग्रामर. ठीक है जी. और डबल वर्ब्स आ रहे हैं, पढ़ाना और पसंद करना. I like to teach you grammar. आई हमारा हो गया सब्जेक्ट, लाइक हमारा हो गया वर्ब वन, टू प्रेपोजिशन हो गया, टीच वर्ब सेकंड हो गया, यू और ग्रामर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं. बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वी हैव a second object or indirect object and a real one. Now here the grammar will stand as real object and you will serve as secondary object because it is the grammar, the real object which we are going to teach. You means the secondary object. इस फिक्रे में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे उर्दू में भी मैंने आपको बताया. मैं पसंद करता हूं पढ़ाना तुम्हें ग्रामर. अब इसमें रियल ऑब्जेक्ट हमारा ग्रामर है, वो चीज है जो हम किसी को पढ़ाना पसंद कर रहे हैं या करते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. मैं ग्रामर तुम्हें पढ़ाना पसंद करता हूं. अब इस फिक्रे में आप तवज्जो दीजिए, हमारे पास ग्रामर पहले आ रहा है और तुम्हें बाद में आ रहा है. तो इसको जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम पहले ग्रामर को यूज करेंगे एंड देन ग्रामर हम यू या जो भी हमारे पास सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है उसको हम इस्तेमाल करेंगे. नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर और द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इन दिस सेंटेंस. आई सर्व्स here as a subject, like verb 1, to preposition, teach verb second. A real object becomes first as it has been used first in Urdu sentence. After that to serves as a preposition and you serve as a secondary object. इस फिक्रे में आपको ये चीज समझाने की कोशिश की गई है कि अगर उर्दू के फिक्रे में हमारे पास पहले जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है उसे हम इंग्लिश में भी पहले इस्तेमाल करते हैं, और अगर उर्दू के फिक्रे में हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है यानी बिगिनिंग में इस्तेमाल हो रहा है शुरू में, तो इंग्लिश में भी हम उसे पहले यूज करेंगे और उसके बाद हम जो भी सेकेंडरी ऑब्जेक्ट हमारे पास आता है उसे हम टू यानी प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे. उससे पहले हम टू इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट की जगह आएगी या नंबर आएगा. वो अली को धोखा देने की कोशिश करती है. She tries to cheat Ali. Now she serves her as a subject. Tries is verb 1. To serves as preposition. Cheat is verb second. And Ali is the object. There is no other object in this sentence. That's why we are simply called it a plain object. वो अली को धोखा देने की कोशिश करती है. वो कोशिश करती है धोखा देने की अली को. बच्चे चिड़ियाघर की सैर करना चाहते हैं. अब इसमें फिर हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा है. The children want to visit the zoo. Children serves here as a subject. Want is verb 1, to preposition, visit verb second, and the zoo is the object or the real object. We can say a real object इसको हम कह सकते हैं. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ. वो अपनी तालीम जारी रखने का फैसला करता है. Here a single subject is using double verbs on the same object. He decides to continue his education. He serves here as a subject. Decides is verb 1, to preposition, continue verb second, and his education serves here as a real object which he decides to continue. वो तुम्हारी मदद करने की कोशिश करने का वादा करती है. Here we have used three different verbs on the same subject. She serves here as a subject. Promises verb 1, to preposition, try verb second, to again preposition, help verb third, and you serve here as an object. वो तुम्हारी मदद करने की कोशिश
करने का वादा करती है। She promises to try to help you. She promises, वो वादा करती है, to try, कोशिश करने का, to help you, तुम्हारी मदद करने की। किसान हमें खुराक मुहैया करने के लिए सख्त मेहनत करते हैं। The farmers work very hard to provide us food. Farmers here serve as subject, plurally. Work is verb 1, very is an adverb. Hard is an adjective, but actually work hard is the same verb. Two serves here as a preposition, provide is verb second, and us and food. There are two objects over. The farmers work very hard to provide us food. In this sentence we have two objects. One is us, मतलब हम हैं, and the food और खुराक है. Now here the food serves as the real object which they are trying to provide us. किसान सख्त मेहनत करते हैं हमें खुराक मुहैया करने के लिए. The last one is वो अली को शाम के वक्त इत्तला देने जाने से इनकार करते हैं. यानी अली कोई है जिसको शाम के वक्त वो लोग इत्तला देने जाने या मुतले करने जाने से इनकार करते हैं. They refuse to go to inform Ali in the evening. Now let's check the order of the words in this sentence. They serve here as a subject. Refuse is verb 1. To preposition go is verb second. To again a preposition has been used over here. Inform is verb 3. Now Ali is the object or the main object in this sentence, and in the evening serves here as an adverb of time. वो अली को शाम के वक्त इत्तला देने जाने से इनकार करते हैं. They refuse to go to inform Ali in the evening.